इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देखिए कि मार्क 4 टैंक में जो टैंक के सेल को टैंकिस्ट प्लेस कर रहे हैं उसको आप देखिए कि कितना बड़ा सेल है। तो आप सोचिए कि एक तरफ से जहां हमास के रॉकेट के हमले हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो मार्क 4 टैंक के सेल से उसका जवाब दिया जाएगा और बीच बीच में जो धमाके की आवाज़ यहाँ पर बॉर्डर पर सुनाई देती है, फ्रंट लाइन पर सुनाई देती है, वहीं ठीक दूसरी तरफ देखिए अमित, दूसरी तरफ आप दिखाइए बहुत सारे जो टैंक मैन हैं वो एक एक सेल को लेकर जा रहे हैं और उसको अपने अपने टैंकों में। तो देखिए कभी भी शुरू हो सकता है ये ऑपरेशन। कुछ घंटे के बाद हमास पर को नेस्तनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन जो होगा उसके लिए देखिए अभी किस तरीके से इस टैंक में जो टैंकिस्ट हैं वो सेल को प्लेस कर रहे हैं ताकि एक साथ अटैक किया जा सकता है। आज की रात भारी पड़ सकती है हमास पर, आज की रात गाजा पट्टी पर भारी होगी। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सोल्जर अपने हिसाब से तैयारी करके उन्होंने रख लिया है, बस एक सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा और ये कूच कर पड़ेंगे गाजा पट्टी में दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद जैसा कि IDF का कहना है कि फिर 100 साल तक कोई भी इजराइल की सरजमी पर आक्रमण करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यहाँ पर हम आपको उन सोल्जर्स को भी दिखाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड ऑपरेशन करने से पहले वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं, बात करते हैं इसमें। हाय, दिस इज मनीष झा, आई एम फ्रॉम इंडिया। Hi, Gabriel. So Gabriel, you are here and any moment you can go for war. So before coming here, what you were doing? Before coming here, I was working in an accountant's office, and I was doing some accounting. So basically you are an accountant and then when your country called you, then you are here. Yes, that's very correct. Hi sir, what's your good name? Micha. Mika. And before coming here, what you were doing? I'm a school teacher. I teach. School teacher? Yes, I teach civic studies and mathematics to the 10th grade. And now you are having weapon? I'm heavy weapon because that's what my country needs. I hear the call and I have to come here. Not something that I really want to do, but something that I have to do. You know, I was in Russia last year. I saw lots of Russian citizens were leaving the country. But when I was coming to Israel, I saw lots of Israeli persons were coming back to Israel. So do you think that this is the specialty of all Israelis? Whenever your country needs you, you are here. Yes, as we see by the statistics, reserve soldiers are being 150% of reserve soldiers arrived. For myself, I didn't even receive a formal invitation to come here. When I saw the situation on Saturday, I took my uniform, took my bag, packed it, and although we don't have public transportation on Saturday, I asked my father to take me right down here. Oh my God! So normally, how much time you get when you call for the duty? It really depends. It varies. We were called up straight away. I was called up straight away, but it depends on people and it depends on the situation. So both of you have a first experience to come at the ground zero, like Operation Zone. Again, I'm sorry. My question is that both of you have a first experience to do duty at Operation Zone. Well, I didn't take any part on any formal operation. We served in the regular forces. You know, all the only the batash. Daily operational Daily duty. operational defense missions. Yeah, that's what we did. My question is, before coming to war zone, what was your job? Like what you were doing? My job is to prepare now for the next step. I don't know what we're going to do. I can't talk about it. Yeah. But we are prepared, like you see, and that's all. Israel going to win this war. Okay. All the terror going to. Okay, and you were saying me that you have some connection with India. So please tell us, what is your connection with India? What? I didn't. The India link. What is your connection with India? My father, born in India. I don't remember which city, but he's born in India,
and you know, I have a big connection to India. Oh, great. So Okay. have you visited India? Not because I'm here, Uh-huh. but after I'm After get war, out, you will visit India. yeah, I will Oh. visit, and maybe we sit on a cup of coffee one Oh, day. great, great, great. Good Thank to you know. very much. Thank you so much. Thank you. I'm just asking, so when you got information that you have to come here, so what was your reaction, your family's reaction? So we don't have to come here because we are instructors, we are not combat soldiers. Uh-huh. But when everything started, of course we wanted to come and help. And our families are worried, I think everyone is worried. But we know we have to do this, we have to help. So we are here. हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं और अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमारे साथ साथ टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। जी हाँ, लगातार इन इलाकों के अंदर टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है और ये वो इलाके हैं जहाँ पे ना सिर्फ टैंक बल्कि बख्तरबंद गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं। ये वो इलाका है जिसे आप वॉर जोन कहते हैं और देखिए लगातार इसी वॉर जोन के अंदर से TV9 भारतवर्ष अब रिपोर्ट कर रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि हम गाजा के इलाकों के अंदर जा रहे हैं और ये वो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील और स्पेशल फोर्सेज के कमांड एंड कंट्रोल में है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस एंटर कर गई थी, वो लगातार अपने मोर्चे संभाली और हम उनके साथ अंदर गए हैं। और देखिए TV9 भारतवर्ष आपको लगातार उन इलाकों से रिपोर्ट करके दिखा रहा है जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस की टीम मौजूद हैं और ये वो सारे टैंक्स, आर्टिलरी और BMP आप देख पा रहे होंगे जो लगातार गाजा पट्टी के अंदर हैं। और इस समय यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस की मूवमेंट चल रही है ये उसको लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्पेशल फोर्सेस की टीम को दोबारा से आदेश दिया था कि आप टैंक्स की मूवमेंट को और बढ़ा दिया जाए, लगातार उनको इतना तेज़ कर दिया जाए कि सभी जो टैंक्स हैं वो अंदर घुस जाएँ। करीब करीब हज़ारों की संख्या में टैंक जो हैं वो इन इलाकों में घुस गए हैं और मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको इसी टैंक्स की मूवमेंट दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे लगातार ये जो टैंक्स है ये लगातार अंदर घुस रहे हैं। हालांकि हम भी इनके साथ गाड़ी के अंदर हैं और हम इनके साथ अंदर मूव कर रहे हैं और स्पेशल फोर्सेस की टीम इस समय कैसे काम कर रही है। ये बुलडोजर्स हैं, ये यहाँ पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कई जगहों पे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स के लिए जो बेसिस तैयार करने होते हैं, यानी जो उनके आप ट्रेंच कह सकते हैं, फिर उनके लिए जो नीचे गड्ढे खोदने होते हैं उसका काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर दीवारें तोड़कर अंदर घुसना है या फिर कुछ चीज़ों को हटाना है वो भी इसी की मदद से किया जाता है। और देखिए ये वो सारा इलाका आप देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टैंक्स ही टैंक्स नजर आ जाएंगे। टैंक्स की पूरी दीवार बना दी गई है गाजा पट्टी के साथ साथ और हम गाजा पट्टी के अंदर यानी गाजा के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो अंदर जाएगा और आपको ये दिखाएगा कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात कैसे हैं। और देखिए अगर आप देखें तो ये वो इलाके हैं जहाँ से मूवमेंट की जा रही है। और देखिए मैं आपको ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए आपको यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस की टीम जिनकी मदद से अंदर घुसी है और इन्हीं चीज़ों से छोड़ते हुए या फिर इन चीज़ों को अंदर अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है इन इलाकों को। और अभी ये वही इलाके हैं जहां से लगातार मूवमेंट भी की जा रही है। देखिए मैं फिर आपको दिखा दूं कि क्या कुछ ताज़ा हालात हैं इस समय यहाँ के। और देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि अब यहाँ से गाजा पट्टी के अंदर ये टैंक्स अंदर घुस रहे हैं जिनके साथ हम इस समय मौजूद हैं और हम भी इन्हीं टैंक्स के साथ लगातार यानी इस पूरी कवर के साथ यानी BMPs और टैंक्स के साथ हम भी अंदर मूव कर रहे हैं। और देखिए स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ हम अंदर गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं। देखिए ये वो इलाका है जो गाजा पट्टी के अंदर का इलाका है और मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत ये रिस्क लेते हुए इन इलाकों के अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए कि अब तक आपने सिर्फ इन ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपको अब इन टैंक्स के साथ या फिर इन BMPs के साथ यानी स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ अंदर लेकर जा रहा हूँ। यानी अंदर यानी जहाँ पर ये सारी मूवमेंट या फिर अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेस की टीम को गो हेड दे दिया गया है और लगभग अब ये ऑपरेशन शुरुआत कर चुके हैं। और अब यहीं से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ग्राउंड फोर्सेस 97 उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिनके खिलाफ जहां से लगातार उन लोगों को निकाला जाना है। और अभी इन्हीं इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए मैं आपको दिखा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भले ही लगातार इजराइल के लिए कई दिक्कतें पैदा हो रही हो, इजराइल के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हो, लेकिन इजराइल इन जगहों पर किस तरीके से काम कर रहा है ये भी आपके लिए देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। इजराइल के लिए ना सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर बल्कि दूसरे बॉर्डर्स पर चीज़ें किस तरीके से तैयार कर दी गई हैं ये आप देखिए। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार
इस समय एक फ्रंट को यानी गाजा फ्रंट को किस तरीके से तैयार किया गया है। और अभी जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी के अंदर के इलाके हैं जहां हम जा रहे हैं, और धीरे धीरे स्पेशल फोर्सेस की पहली यूनिट के साथ, यानी गाजा यूनिट, गाजा में बैठकर जो पहली यूनिट है जिसने इलाका कैप्चर किया है, हम उनके साथ मौजूद हैं और अभी उन्हीं के पास जाकर हम आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे कि आखिरकार इस समय क्या ताज़ा हालात हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये वो सारे इलाके हैं जहां से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब बाहर की जगह हम गाजा पट्टी के अंदर पहुंच चुके हैं। गाजा पट्टी के अंदर का वो इलाका जो आपके लिए देखना समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत है, और ये स्पेशल फोर्सेस की टीम अभी ऐसी जगहों पर तैनात की गई है जहां से आप ये रिपोर्ट देख पाएंगे। और देखिए ये वॉर फ्रंट है, ये वो वॉर फ्रंट है जिसके बारे में पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। वो ताज़ा हालात हम आप तक पहुँचा रहे हैं और उन जगहों पर आपको लेके जा रहे हैं जहां पर ये लोग इस समय ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और इनके साथ सबसे खास बात ये स्पेशल टीम्स के साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो हॉस्टेजेस पॉसिबिलिटीज़ को या फिर उनकी जगहों को उनको निकालने के लिए कारगर हैं, यानी स्पेशलाइज फोर्सेज भी उनके साथ मौजूद हैं। मैं फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं और आपको समझाएं कि इस समय हम कहाँ पर मौजूद हैं। और कई जगहों पर आपको इस तरीके की वॉल्स या फिर आपको रोधक या फिर आप कह सकते हैं बैरिकेडिंग्स नज़र आ जाएंगी जहाँ से लोगों को रोका गया था या फिर जहाँ से हमास ने एंटर किया था। और अभी हम इन लोगों के साथ मौजूद हैं और देखिए ये बड़ी बड़ी दीवारें जो आप देख पा रहे हैं, ये गाजा पट्टी की वो आप कह सकते हैं कि ये वो जगह हैं जहां से उन लोगों को या फिर हमास के लोगों को रोका जाता था गाजा में एंटर करने के लिए। और अब इन्हीं दीवारों का इस्तेमाल लगातार ऑपरेशंस को, इन दीवारों को हटा के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए इस समय हम गाजा पट्टी पर हो, ये गाजा पट्टी की वो फेंसिंग है जो लगातार आप देखते होंगे या फिर आपने सुना होगा। इसके अलावा एक और आगे फेंसिंग है जो फॉरवर्ड फेंसिंग जिसको कहा जाता है। ये पूरे इलाके इस समय तब्दील हो चुके हैं वॉर जोन के अंदर। और TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों से ये सारी रिपोर्ट करके दिखा रहा है और बता रहा है कि आखिरकार इस समय हम कहाँ मौजूद हैं। हालांकि हम उस जगह मौजूद हैं जहां से लाइन ऑफ एक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन से सारे अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए पूरे इलाके अगर आप देख रहे हो आपको इजराइल के झंडे अब नज़र आ जाएंगे। इजराइल ने इन इलाकों पर अपने आप को मजबूत कर लिया है, ऐसे बड़े बड़ी जगहों पे ये झंडे लगा के साबित करते हैं। देखिए ये वो जगह हैं जहाँ से गाजा पट्टी से काट कर, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो कि यहीं से काट कर वो आए थे, गाजा पट्टी के अंदर मौजूद हैं। और देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो इजराइल का एरिया था जहाँ से काट कर इन्होंने घुसपैठ की और अभी इन इलाकों के अंदर फायर फाइट चल रहा है। और अभी ये आप पूरा इलाका देखे, ये कुछ आखिरी इलाके ऐसे थे जहाँ पर लगातार अब भी वॉर जैसा सिनारियो है। हालांकि हमको बोला गया है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज की यूनिट को अटैक करने या फिर उनकी जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल फोर्सेज के पूरे इलाके अगर आप वो देखें, वो गाड़ियाँ आप लोकल्स की देखें जो जिनको हमास के लोग लेकर आए थे यहीं छोड़ गए हैं और अब सारी चीज़ें यहाँ से अंदर जाएंगी। और देखिए कुछ और जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से काट कर, यानी जिन फेंसिंग को काट कर हमास घुसा था और या फिर हमास अब इन इलाकों से अपने इलाकों में घुस गया। मैं आपको उस जगह से दिखा रहा हूँ जहाँ से गाजा पट्टी, ये पूरा इलाका हम इस समय गाजा पट्टी के अंदर मौजूद है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस जगह पर इस समय मौजूद हैं। और देखिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार मूव कर रहे हैं और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी के क्या ताज़ा हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये वॉर जोन का वो इलाका है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है क्योंकि सारे इलाके खाली हो चुके हैं। सारे इलाके वो हैं जो इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर या तो आपको शेल्स की आवाज़ सुनाई देगी या फिर मूवमेंट नज़र आएगी टैंक्स की और आर्टिलरी गन्स की। टैंक्स आर्टिलरी गन्स लगातार अंदर मूव कर चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस की टीम अंदर मौजूद है। और देखिए ये आपको नज़र आएगा, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इन घरों से, यानी इन घरों के पास से ही लगातार मूवमेंट की गई थी। देखिए ये घरों की हालत देखिए, स्पेशल फोर्सेस की टीम आपको नज़र आ जाएगी और ये आपको इन इलाकों को अब होल्ड अप करके बैठे। देखिए ये गाजा हमास के जो आतंकी थे ये वो गाड़ियाँ लेकर आए थे, ये उनकी चीज़ें हैं। और अभी मोटे तौर पर अभी जो यहाँ के ताज़ा हालात हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए ये सारे इलाके इस समय वॉर जोन में तब्दील हो चुके हैं। स्पेशल फोर्सेस की टीम ने लगातार इन इलाकों को घेर लिया है, कैप्चर कर लिया है। फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि जो फेंसिंग थी गाजा की वो कैसी है, वहाँ पर कैसे लोग इस समय मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें आप देखकर समझ सकते हैं। और देखिए जिन ग्लाइडर्स की मदद से, पैराग्लाइडर्स की मदद से लगातार आतंकी आए थे या फिर हमास के लोग आए थे, आप वो भी देख सकते हैं। और लगातार हम इन इलाकों में आपको जाके दिखा रहे हैं। हालांकि ये वो इलाके हैं जहाँ से
निशांत, आपने अगर नीचे कैमरा किया हो तो आपको एक पैराग्लाइडर नज़र आ जाएगा और ये वो इलाके हैं जहां पर हमास की तरफ से ना सिर्फ होल्ड अप कर लिए गए थे बल्कि सबसे ज़्यादा आतंक भी मचाया गया था। और देखिए ये गाज़ा पट्टी के अंदर मौजूद है और ये सिर्फ इलाका आपको सिर्फ या तो अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहीं से अब दोबारा से स्पेशल फोर्सेस के अंदर मूवमेंट की गई है। और देखिए बच्चों के खिलौने यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। और अभी आप अगर आवाज़ सुन रहे हो, देखिए उधर अगर आपको दिखाएं तो लगातार फायर किया जा रहा है और ये गाज़ा के इलाकों में लगातार फायर करने की जो कवायद है या फिर जो ऑपरेशन है उनकी शुरुआत हो चुकी है। और अभी स्पेशल फोर्सेस की टीम एक बैकअप के तौर पर भी काम कर रही है और ये बैकअप जहां मौजूद है हम भी वहीं मौजूद हैं और हम आपको बता रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात है। देखिए ये सारे घर इस समय अब वॉर जोन में तब्दील हो चुके हैं। और देखिए अभी हम फिर से दोबारा से आपको वो रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं, वो जगह बता रहे हैं जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। और आप इन घरों को देखिए, इन जगहों को देखिए, इन इलाकों में हम लगातार आपको ये रिपोर्ट करके दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अभी क्या माहौल है यहाँ पर। और देखिए जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो लगातार आर्टिलरी फायर भी कर रही है, उसकी आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे। और मैं आपको फेंसिंग के साथ साथ में गाज़ा का इलाका भी दिखाता जा रहा हूँ और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम इस समय कैसी जगह पे मौजूद हैं, कैसे लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं। और देखिए ये पूरी फेंसिंग जो है वो गाज़ा की फेंसिंग है, यानी गाज़ा जो आप जहाँ पे युद्ध चल रहा है ये सारे इलाके वही हैं। और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हों, ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे टैंक्स ने अपनी जगह ले रखी है। इस तरीके की बड़े डिस्ट्रक्शन या फिर बड़े आपको अटैक्स नज़र आ जाएंगे। आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से तबाही मची इजराइल के इलाकों में और जिसके बाद लगातार अब इजराइल ने भी इन इलाकों में फायर करने शुरू कर दिए हैं। आप अब इन नज़ारे देखिए इन चीज़ों के और हम आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए ये वो इलाके हैं जो इम्पॉर्टेंट इसलिए आपके लिए जानना है कि अभी क्या इस समय जंग के हालात हैं, जंग के हालातों में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस ने टेक ओवर कर रखा है, लगातार स्पेशल फोर्सेस की यूनिट यहीं से अपने काम को अंजाम दे रही है, अपने मिशंस को अंजाम दे रही है, यहीं से हॉस्टेजेस को छुड़ाने की रणनीति तय की जा रही है। और हम इस समय मौजूद हैं इन्हीं इलाकों में जहाँ पर इस तरीके के वॉर सिनेरियो या फिर वॉर स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी यहीं से उन सभी रणनीतियों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो गाज़ा के अंदर चल रहे ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। मैं जो आपको बता रहा था कि इस समय किस तरीके के हालात हैं और स्पेशल फोर्सेस की टीम अभी आराम कर रही है। ये बैकअप टीम है जो अभी दोबारा से अंदर जाएगी, यानी एक टीम जो लगातार ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है उसको बैकअप करने के लिए दूसरी टीम तैयार की जा रही है। और ये टीम अगर आप देखें इनके सर्विलेंस सिस्टम में आपको दूसरे सिस्टम्स भी यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये वो सब सर्विलेंस सिस्टम है जिनकी मदद से ये लगातार उन अटैक्स को निष्क्रिय भी कर रहे हैं जो लेबनान या जो गाज़ा की तरफ से लगातार हमास द्वारा किए जा रहे हैं। यानी ये वो मशीन से इक्विपमेंट है जो लगातार यहाँ पर वॉर के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेशल फोर्सेस की टीम में अगर आप देखें आपको जितने पुरुष नज़र आएंगे उतनी ही महिलाएं नज़र आ जाएंगी। इजराइल का ये एक काम करने का तरीका है कि वो हमेशा अपने दोनों लोगों को यानी महिला और पुरुष दोनों को ही लगातार साथ लेकर चलते हैं। स्पेशल फोर्सेस के लोगों के साथ जा रहे हैं उन इलाकों में और ये मूवमेंट है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि वॉर फ्रंट के अंदर क्या इस समय हालात हैं, ये आप इन इलाकों को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, जो असॉल्ट राइफल्स कह लीजिए आप इनके पास जो आरपीजीज़ हैं या फिर जो आप मान के चलिए कि टैंक्स, आर्टिलरी गन्स या फिर दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, वो अत्याधुनिक हैं। और इनको ना सिर्फ अब इस मामले में सपोर्ट अमेरिका का भी मिल रहा है और यही वजह है कि अब इनका पूरा फोकस सिर्फ गाज़ा में अपने ऑपरेशंस को जल्दी अकम्प्लिश करने का है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें इजराइल के इन सोल्जर्स के दिमाग में है कि पहला गाज़ा पट्टी के अंदर घुस जाना, मजबूत करना, और दूसरा उसको पूरी तरीके से हमास मुक्त कराना। जंग के हालात कैसे होते हैं, जंग के तस्वीरें कैसी होती हैं, ये आप देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद हुए घर नज़र आ जाएंगे, तबाह हुए घर, लोगों के वो घर जो कभी यहाँ उनके रहने की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये वॉर जोन है। यहाँ वॉर जोन जहाँ पर TV9 इस समय मौजूद हैं। अगर आप जितना मर्जी आप कैमरा घुमा लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे घर ही नज़र आ जाएंगे। और ये देखिए अभी मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ऐसे ही घरों से वो तस्वीरें दिखा रही हैं जो
इस समय गाज़ा पट्टी पे हैं। देखिए मैं आपको कह रहा था बैकअप टीम लगातार तैयार हो रही है, वो बैकअप टीम अब गाज़ा पट्टी के अंदर दोबारा से जाएगी। आपको नज़र आ जाएगा स्पेशल फोर्सेस की टीम जो है इस समय अब ऑपरेशन चलाने के लिए एक बार फिर अंदर घुस रही है। एक ब्रीफिंग चल रही है उनकी, और जिसके तुरंत बाद वो अंदर ऑपरेशंस यानी अंदर ऑपरेशंस करने के लिए जाएंगी, बैकअप देगी उस टीमों को जो अंदर मौजूद हैं। और मैं इन इलाकों से आपको रिपोर्ट करके इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप ये समझिए कि इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए रिपोर्ट करते हुए कई बार आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। देखिए अगर आप देखें ये लाइव ग्रेनेड है, यहाँ पर जब हम रिपोर्ट कर रहे थे उसी समय ये लाइव ग्रेनेड हमको यहाँ मिला, जिसको स्पेशल फोर्सेस की टीम ने देख लिया है। अब इसको यहाँ से हटाया जाएगा, हमको भी यहाँ से दूर जाने की इजाज़त बोला गया है। और अब देखिए रिपोर्टिंग के दौरान इस तरीके से लाइव बॉम्ब्स हमको मिल रहे हैं उन इलाकों से जहाँ पर इस समय स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन चल रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ से स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट कर रही है। मोटे तौर पर जिस दिन से ये वॉर शुरू हुई है उसके हर दिन 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज बदलती रही हैं, और ये स्ट्रैटेजीज इसलिए बदल रही हैं ताकि स्पेशल फोर्सेस अपना काम आसानी से कर सके, यानी उन इलाकों में जाएं गाज़ा के जहां पर हमास ने अपने बेस बना रखे हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ में, उन्हीं रेजिडेंशियल एरियाज़ में घुसने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप ये इलाके देख रहे हो अब इनको पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है। और अभी ये लाइव बॉम्ब है जिसको मैं आपको दिखा रहा था कि ये ग्रेनेड है जो एक हमास के आतंकी के चेस्ट पे या फिर उसकी वेस्ट पे लगा हुआ था, जो यहाँ रह गया। हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा और उसके बाद अब इसको हटाने की कोशिश चल रही है। यानी आप मानिए कि अभी भी इस इलाके में क्या दुविधा है, क्या परेशानी है फोर्सेस के लिए भी इजराइल की, वो ये कि इन इलाकों से आपको हटाना या फिर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये है स्पेशल फोर्सेस की टीम जो यहाँ से मूव कर रही है इस समय, और ये टीम अब गाज़ा के उन इलाकों में जा रही है जहाँ पर आप लगातार आपने ऑपरेशंस के बारे में देखा होगा। और देखिए पूरी टीम जो है स्पेशल फोर्सेस की टीम इस समय अब गाज़ा के उन इलाकों में घुस रही है, और हम उस टीम के साथ मौजूद हैं। यानी स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ इस समय TV9 भारतवर्ष मौजूद है और लगातार आपको रिपोर्ट कर यहाँ से दिखा रहा है। महत्वपूर्ण आप जानिए कि आप अगर इनके हाथ में राइफल्स देखिए, आपके नाइट विजन कैमराज देखिए, इनके पास जो इनके इक्विपमेंट है वो देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये दिन रात कैसे ऑपरेशन चलाने के लिए काबिल है। यानी ये वो ऑपरेशन होते हैं जो आपको ऐसे अर्बन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। और अभी इस टीम के साथ हम मौजूद हैं। देखिए ये RPGs हैं जिनको फायर किया गया था, और अभी इस वॉर जोन्स के अंदर हम आपको हर पल की जानकारी दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय का क्या सिनेरियो है। ये फ्रंट लाइन के वो बैकअप एरिया हैं जिनको अंदर घुसने की इजाज़त दे दी गई है, यानी अब ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। और अगर आप देखें ये टीम तैयार है अब से अटैक करने के लिए उन हॉस्टेजेस लोकेशंस को जहां पर ये टारगेट किए गए होते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखकर समझिए कि इस समय के हालात कैसे हैं। TV9 भारतवर्ष दुनिया का ऐसा पहला चैनल है जो आपको इन इलाकों से अंदर, गाज़ा पट्टी के अंदर इन इलाकों में घुसा है और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी के ताज़ा हालात यहाँ पर कैसे हैं। स्पेशल फोर्सेस की टीम के पास जो इक्विपमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके पास नाइट विजन इनके कैमराज हैं, इनके पास जो असॉल्ट राइफल्स हैं, इनके पास कई ऐसे बैकअप्स हैं जो लगातार इनको ऐसे वॉर जोन्स के अंदर, अर्बन वॉर जोन के अंदर काम करने के लिए इनको ज़रूरी होते हैं, और ये लंबे समय तक इन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। यानी वो ऑपरेशन जिनकी अवधि करीबन 24 से 48 घंटे की हो सकती है, और उसके बाद इनको बैकअप टीम सपोर्ट करती है। और अगर आप देखें ये कमांड सेंटर से बिल्कुल कंट्रोल रहेंगे, यानी जब ये इन ऑपरेशनल एरियाज़ में होंगे हम इनके साथ होंगे और हम आपको ये बताएंगे पल पल की जानकारी कि आखिरकार इस समय क्या मौजूदगी है। और अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप देखें कि ना सिर्फ इनके पास छोटे असॉल्ट राइफल बल्कि गन मशीन, लाइट गन मशीन्स भी आप देख सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन वॉर जोन के अंदर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और हम आपको सीधे तौर पर इन्हीं वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए अब ये स्पेशल फोर्सेस की टीम दोबारा से अंदर जा रही है और हम भी इनके साथ अभी अंदर जाएंगे। और देखिए एक बार फिर इनको बोला गया स्टे ऑन, यानी आप लगातार चलते रहिए और हम भी इनके साथ इसी तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए चलते रहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इधर आए और पीछे से दिखाए कि आखिरकार किस तरीके के हालात हैं। और मोटे तौर पर अगर आप समझिए कि अभी बहुत मुश्किल है, ये वो हालात हैं वॉर के जो आपको ये दिखाने के लिए मजबूर करते हैं या फिर आपको ये समझाने के लिए मजबूर करते हैं कि इस समय क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, और ये इन इलाकों में जाकर आपको समझ भी आ जाता है। यानी आप देखिए कि कैसे अब ये गाज़ा बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं और हम भी इनके साथ गाज़ा बॉर्डर के अंदर इस समय जा रहे हैं, और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग के मैदान में जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं वहाँ से रिपोर्ट करना कितना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि अभी
इन इलाकों में रिपोर्ट करना या फिर लगातार इनके साथ रहना कितना चैलेंजिंग होता है। और देखिए सामने फेंसिंग आपको नज़र आ जाएगी और मैं उसी फेंसिंग के साथ साथ अंदर जाऊंगा और आपको गाज़ा पट्टी के अंदर से रिपोर्ट कर दिखाऊंगा कि आखिरकार उस वॉर फ्रंट के नज़ारे, उस वॉर फ्रंट के तरीके कि क्या उस समय मौजूद हैं। और पीछे अगर मैं देखूं कि आपको ये देखने को समझने की मजबूर, आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार अभी किस तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने यहाँ पर आ रखे हैं जो वॉर फ्रंट में हम मौजूद हैं। और देखिए अभी स्पेशल फोर्सेस की टीम अंदर जा रही है जहाँ से हमें ऑपरेशन कर रहे हैं। गाज़ा पट्टी के अंदर घुसते घुसते इन इलाकों के अंदर हमको वो भी सबूत नज़र आए जो इस समय हमास के लोग जो हथियार या फिर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें ये हमास के हथियार हैं लगातार जो पकड़े गए हैं, उनके बैकपैक्स, उनकी चीज़ें, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन, AK-56 या फिर AK-47 जैसे मॉडिफाई वर्जन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स, RPGs और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप देखें उनके बैकपैक्स, उनके एम्यूनिशन को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी से लगातार हमास के लोग जो हैं इन इलाकों में बैठे हुए हैं और अभी भी रहकर अटैक कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी जब हम गाज़ा पट्टी के अंदर इन इलाकों में जा रहे हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और अगर आप देखें कि इन इलाकों से रिपोर्ट करना हमारे लिए भी, हालांकि हमको बोला गया कि जल्दी निकलिए क्योंकि अभी कई जगहों पे शेल्स फायर किए जा रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी इन इलाकों से आगे निकलना होगा ताकि क्योंकि आप भी उनकी जद में ना आ जाएं। हमारे साथ मेजर रॉन्ज हैं जो इस समय इस पूरे ऑपरेशनल एरिया को कमांड कर रहे हैं, यानी जो यूनिट्स हैं, स्पेशल यूनिट्स, वो इस इलाके में जा रही हैं, उनको कमांड कर रहे हैं, उन इलाकों में मौजूद हैं जहां से हमास को हटाया जा रहा है। मेजर रॉन्ज, फर्स्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज what exactly the situation right now in the front, because you are on the front, we are in the Gaza Strip, and what is the condition right now? We are attacking the terrorists that made this massacre the last Saturday the 7th. You can see here how they burned families alive. You can see here how the terrorists, the bodies of the terrorists are right now inside the civil houses, and we are fighting with the Hamas in order to eliminate their military power, so they will never do it again. And Ranj, everybody has a question in whole world. Is the special forces entered the Gaza border? We are in the Gaza. I know that we are in the Gaza. Just for them, did the special forces or the IDF have entered the Gaza? Not yet. We just entered to take some bodies of hostages that we found. These bodies near the border with Israel inside the Gaza Strip, but it was a very short entrance. We are here with 35 battalions, and we are ready for every contingency. And 35 battalions. And what about the tanks and BMPs, the border, the heavy vehicles you have taken to this location? What is the numbers of that, if you can? I cannot say all the numbers, but I can tell you that we are ready to do everything that the decision makers will ask us to do. We are a democratic country, and we are here in order to restore the security perception and the security of the Israeli population. Is there any time frame when you complete this operation? Any time frame you have decided that we have a time frame, we will decide? What is your mind when you are going inside the Gaza? We have a time frame for everything. We are going in every step of the operation, step by step, but I cannot tell this to the Hamas. And I hope that you complete your operations very soon, because you have a time frame in you. And what you have to say to world when you heard about so many things around the world regarding the Israeli people, especially the Lebanon border. We have listening from the other borders, Israeli borders. What do you have to say regarding all these things? Look, we are also in the Lebanon border, in the Israeli side. Hamas hope that Hezbollah will enter this war, but the international community from one side and the Republic of Lebanon from the other side, they are the one that has to tell Hezbollah that if they are entering the war, they are dragging all the Middle East to a bigger and bigger world. Thank you, Major Ranj, talking to us, and I hope that Indian masses will listen to you and they will come to know what exactly is going on in these areas. Thank you very much, Ranj. Okay. Major, thank you very much. We are right now at the place where the gunfight between the IDF and the Hamas militants took place. I just want to show you what exactly and how massive the fight is, because these are I'm very near to the especially to the Gaza Strip, and this is around
3 to 4 kilometers from this, and I can then show you how exactly the Hamas militants have entered. Right behind me, this is the car which they have generally used when the Hamas militants entered, and you can see, my camera person can show you exactly the bullets. You can see the bullets in the car, you can see the manuals, you can see the books of Hamas militant which are they using. This is the vehicle they have been using to enter at the various locations, and they have been using RPGs, they have been using gun machines. And when IDF came into these locations, they first neutralized and they captured all these vehicles. You can see the bullet marks on the on all these vehicles, because when the encounter took place between both the parties, they have been neutralized. And you can see how well planned and they have well executed this, because the Hamas have a big plan, because they have come with a lot of water, the dry foods, the ratio, the food to eat. And you can see this is the RPG shells, these are the water bottles, they are the cutters they have been using to cut the wires, and especially the dry foods they have been using. You can see these are the dates which generally these countries have very common, but when I asked them, these are the water bottles which are available in the Gaza only. So this is not things which are available in the Israel. And you can see the glucose bottles, the ORS, the medical kit. You can see these are they have came with a very well planned things. This is the bandages, they have the water bottles, sanitizers, injections, syringe. So they have a very well planned. They wanted to come to this location, they wanted to neutralize, they wanted to hold up all these locations for a very long period. But the point is, they don't get that much of support from their from the back, so that they are not able to sustain for long. And you can see these are the multiple vehicles we have been targeted by the IDF. और ये वो आर्टिलरी लोकेशंस है जहां से लगातार हमास को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ये आर्टिलरी गन्स आपको मेरे पीछे नजर आ जाएंगी। आर्टिलरी गन्स ये करीब बताया जा रहा है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं, और इनकी रेंज कई आर्टिलरी गन्स की करीबन 35 to 40 किलोमीटर्स की करीबन इनकी रेंज है। और इन जगहों को आप देखिए कि इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जहाँ से आप धुआं उठता देख रहे हैं वो गाजा पट्टी है। देखिए मेरे कैमरा पर से निशांत आपको दिखा पा रहे हो कि जहाँ पे धुएं के आपको गुबार नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, वो सारे गाजा पट्टी के एरिया। और जब भी जरूरत पड़ती है ये आर्टिलरी गन्स यहाँ से फायर करते हैं। ऐसी मल्टीपल लोकेशंस बनाई गई हैं। मैं आपको एग्जैक्टली इस जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि हम गाजा पट्टी के बहुत करीब हैं। 4 से 5 किलोमीटर के पीछे का ये एरिया है जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया गया है। और अभी अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि कई मल्टीपल आर्टिलरी गन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इनकी रेंज या फिर इनकी जो बैरल है उसके निशाने पर गाजा पट्टी है, यानी जब इनको गोहेड मिलता है ये फायर करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने फायर बंद किया है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस समय किस तरीके के हालात हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पे IDF की जो आर्टिलरी गन्स है, आर्मर्ड है, उनको तैनात किया गया है। मुझे बताया गया कि अभी कुछ और चीज़ों को दूसरी लोकेशन पर भी भेजा गया है। कई और ऐसी मल्टीपल जगह हैं जहाँ पर ऐसे आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया गया है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो हमास के मिलिटेंट्स की तरफ से टारगेट किया गया था, लेकिन रिटेलिएटरी एक्शंस यानी रिकैप्चरिंग या फिर आप कह सकते हैं कि हमास के खिलाफ जो वॉर छेड़ी है इजराइल ने, वो अब किस तरीके से रुख लेती जा रही है, वो उसकी डिप्लॉयमेंट कैसी है। हम TV9 भारतवर्ष आपको पिछले कई दिनों से लगातार 2 दिनों से लगातार हम आपको इन लोकेशंस पे, मल्टीपल लोकेशंस पे दिखा रहे हैं। देखिए अब एक आप देखेंगे कि आगे आपको एक बार फिर जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ जाएगा। मेरे कैमरा पर्सन निशांत अगर आपको दिखा पा रहे हो तो ये वही इलाका है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि इन रॉकेट से दागा इन आर्टिलरी गन से दागा गया था। और लगातार अपनी इस जगह की डिप्लॉयमेंट इस तरीके की रखी गई है इन्होंने कि कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी इनको दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप देखेंगे शेल्स आप देख सकते हैं उनके, आप शेल्स भी देख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी जगह आप देखें कि कैसे इस पूरे एरिया को सिक्योर किया गया है। हम इस समय सिद्रौट के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और उसी समय हमें ये दिखाई पड़ा कि यहाँ पर किस तरीके से हमास की तरफ से जो अटैक किए गए थे उसके बाद लगातार ये मंजर है। और ये देखिए ये सारे इलाके वो हैं जो गाजा पट्टी के बेहद करीब हैं। ये देखिए पूरे इस गाड़ी को तो परखच्चे उड़ गए जिस पे रॉकेट दागे गए थे। बताया जा रहा है कि कल भी इस तरीके के रॉकेट दागे गए हैं और इन इलाकों में लगातार हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। हालांकि आयरन डोम की मदद से ज़्यादातर निष्क्रिय किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट जो हैं वो रिहायशी इलाकों पर गिर रहे हैं। और देखिए मंजर देखिए, ये ना सिर्फ यहाँ आपको यहाँ नज़र आएगा
डिस्ट्रक्शन। आप स्प्लिंटर्स के निशान देख सकते हैं दीवारों पे, कितना मैसिव, कितना भारी भरकम अटैक रहा होगा। और ये देखिए स्प्लिंटर्स के निशान आप घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह देख सकते हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, जिनका जो डिस्ट्रक्शन था, जो इनका इम्पैक्ट था वो कितना ज़्यादा था कि आसपास हर जगह पर आपको ऐसे कुछ निशान नज़र आए। आप कुछ कदम चलेंगे आपको गाड़ियां बर्बाद नज़र आ जाएंगी। ये दूसरी तरफ घर है, इसमें भी इस तरीके की बर्बादी तबाही हुई है। ये देखिए यहाँ पर भी एक रॉकेट गिरा था और इसके अंदर भी आप देखिए बच्चों के खेलने की जगह थी। पूरे इलाके को किस तरीके से, पूरे घर को किस तरीके से क्षति पहुँची है। यहाँ एक और निशाना मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी तरफ देखिए कि आप सिर्फ जाते रहिए इन इलाकों के अंदर। ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे उस समय। और ये देखिए पूरी तरीके से इन इलाकों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरी तरीके से यहाँ पर कितनी तबाही हुई है। आप ये देखिए कि हर दूसरी गाड़ी में आपको इस तरीके के निशान नज़र आ जाएंगे। और स्प्लिंटर्स के निशान अगर आप देखें, जो इम्पैक्ट था उस रॉकेट का वो उनकी दीवारों पर आपको नज़र आ जाएगा। और ये हालत है इस समय यहाँ पर लोगों की, या फिर आप कह सकते हैं कि ये हालत है इस समय, यहाँ के लोग दहशत में हैं, यहाँ के लोग। इसके अलावा अगर आप देखें तो लगातार इन इलाकों में हालांकि फोर्सेस जो हैं वो आ रही हैं लोगों की मदद के लिए, लेकिन फिर भी ये देखिए किस तरीके से पूरे घर के आगे का हिस्सा जो है, जो प्रीमिसेस होता है, गार्डन एरिया बर्बाद कर दिया गया है। और ये हर दूसरे घर की यही निशानी है, या फिर हर दूसरे घर में इसी तरीके का मंजर आपको देखने को मिलेगा। और ये हालत है इस समय। हम इस समय आगे बढ़ रहे हैं सिद्रौट की तरफ। और आपको बता दूं कि जब ये शनिवार के दिन जब अटैक किया था हमास के आतंकियों ने, तब भी यही इलाके थे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इन 3-4 इलाकों में उन्होंने घुसपैठ की थी और उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़े थे। और ये देखिए मैं आपको एक बार फिर वो नज़ारा दिखा देता हूँ। आपको नज़र आएगा कि इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो उस रॉकेट के भी जो शेल्स हैं, शेल्स का जो टुकड़े होते हैं स्टील्स के, वो आपको नज़र आ जाएंगे इसके अंदर। और ये पूरा डिस्ट्रक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी तबाही आपको इजराइल के साउथ के एरिया में, सदर्न एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। अशकलोन वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा आप त्रासदी या बर्बादी की तस्वीरें देख सकते हैं। ये साउथ इजराइल का वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे। लगातार इस इलाके में हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष वो अकेला चैनल है जो आपको इन डेप्थ रिपोर्टिंग करते हुए बता रहा है कि आखिरकार जो खबरें आप सुन रहे हैं इजराइल के बारे में, उनकी सच्चाई क्या है, उनके हालात कैसे हैं इजराइल के इन इलाकों के जहां पर ये वॉर चल रही है। और मैं इस समय ऐसे ही एक घर पे हूं जिसको कल बताया जा रहा है कि अटैक किया गया था। ये देखिए लगातार अगर आप देखें पूरा घर बर्बाद हो चुका है। पूरे घर में किस तरीके के आलम है, किस तरीके के हालात हैं। देखिए इस पर अटैक हुआ था रॉकेट से और अब ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है। पूरा घर टूट फूट चुका है। लोग यहाँ से जा चुके हैं, उनको विस्थापित कर दिया जा चुका है। लेकिन हालत क्या है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बच्चों की किताबें, बच्चों के खिलौने, आपको घर का साजो सामान सब आपको यहाँ पर बिखरे हुए नज़र आ जाएंगे। आपको दिख जाएगा कि कैसे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यानी हमास ने जिस तरीके से रॉकेट दागे थे उसके बाद क्या हालत है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए ये घर है, इस घर के सारे अप्लायंसेस यानी फ्रिज, टीवी सब टूट चुके हैं। ऊपर की इमारत पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि पूरी जल चुकी है। और ये 2-3 घर थे यहाँ पर, इन घरों के अंदर उनके जो मोटरसाइकिल स्कूटर्स खड़े हैं वो भी यहाँ पर जल चुके हैं, आधे जले हैं। और ये देखिए कहाँ से रॉकेट आया होगा वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए पूरी क्या इम्पैक्ट रहा होगा इस जगह पर इस रॉकेट्स का। आप देखिए इसकी दीवारें तक, इसकी ऊपर जो चीज़ें हैं वो तक खोखली हो चुकी है। ये पूरा हिस्सा जो है इसका जल चुका है। और देखिए ये कुछ आलम है। मैं आपको बता रहा था कि इजराइल के सदर्न एरिया का, इजराइल सदर्न एरिया में, और ये वो इलाका है जो गाज़ा पट्टी के ठीक साथ लगता हुआ एरिया है। और ये समय वॉर जोन का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल एरिया है। कई जगहों पर मल्टीपल अटैक्स किए गए थे। देखिए जिस दिन अटैक किया गया था उस दिन ना सिर्फ हमास के जो मिलिटेंट्स थे वो इन इलाकों में घुसे, बल्कि जैसे ही उन्होंने जगहों को कैप्चर किया उसके बाद लगातार अटैक होने शुरू हो गए। 5000 से ज़्यादा बताया जा रहा है रॉकेट दागे गए थे। और उसके बाद अभी भी इन्हीं इलाकों में रॉकेट दागे भी जा रहे हैं। हम आज भी इन इलाकों के जब अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे, हमारे सामने कई घरों को लाइव बर्बाद किया गया है, रॉकेट से टारगेट किया गया। मल्टीपल रॉकेट्स दागे जा रहे हैं जिसमें से आयरन डोम जो है वो कईयों को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन फिर भी कई जगहों को टारगेट कर देता है। और ये देखिए
क्या हालत है। हालांकि इस घर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। बच्चों के खिलौने, दवाइयाँ, आपको उनके कपड़े, अप्लायंसेस, सब कुछ तहस नहस नज़र आ जाएगा। और ये तस्वीरें हैं इस समय इजराइल की, कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने की कोशिश करती हैं कि इस समय क्या हालात हैं इजराइल के। इजराइल जिसे सुपर पावर कहा जा रहा था, जिसको इसके इंटेलिजेंस और चीज़ों के बारे में बातें होती थी, वहाँ की हालत क्या है। और इन्हीं एरियाज़ के अंदर हमास के कई आतंकियों ने या फिर आपके कई लोगों ने, इनके मिलिटेंट्स ने, इन्होंने घरों में जाकर कैप्चर करने की कोशिश भी की थी, यहाँ से लोगों को ले जाने की भी कोशिश की। और यही इलाके हैं जहाँ से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए TV9 भारतवर्ष आपको असलियत से रूबरू कराना चाहता है। ये वो सोल्जर्स हैं जो लगातार यहाँ पर दिन रात अपने देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अभी हम इन्हीं के साथ मौजूद हैं। और देखिए, स्पेशल फोर्सेस की यूनिट के साथ TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो यहाँ मौजूद है। पूरी दुनिया को हम ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इजराइल की इस समय वॉर चल रही है, किस तरीके से। देखिए, आपको लाइट मशीन गन्स नज़र आ जाएंगी, आपको असॉल्ट राइफल्स नज़र आ जाएंगी, आपको इनके आर्म्स एम्यूनेशन नज़र आ जाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि नाइट विजन कैमराज इनके पास हैं। तो नाइट और डे दोनों के अंदर ये ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और देखिए, ऐसी ही यूनिट्स आपको लगातार, निशांत आप इधर भी दिखाइए, निशांत मेरे साथ हैं। ये वो टीम्स हैं जो अभी स्टैंड बाय पर हैं, इनको अभी हरी झंडी मिलेगी और फिर ये यहाँ से घुसना शुरू करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप ये मान के चलिए कि स्पेशल फोर्सेस के साथ TV9 भारतवर्ष की ये टीम है। और देखिए, ये वो सारे लोग हैं जो अभी किस तरीके से तैयार कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए, और अभी हम इनके साथ ही मौजूद हैं। देखिए, इसके अलावा निशांत आप ये बता रहे हैं, निशांत मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं। और अभी आप देखिए कि टैंक, आर्टिलरी मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्पेशल फोर्सेस की जो टीम है वो कैसे तैयार हो रही है। थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, इनको अंदर जाना, अपने मेडिकल किट, अपनी साजो सामान ये लोग रख रहे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन तैयार कर रहे हैं, और इसके बाद इनको अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। हरी झंडी मिलते ही ये तैयार हैं, यानी बॉर्डर पर, हम इस समय गाज़ा के बॉर्डर पर हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लगातार इन टीम के साथ है जिन्होंने इस इलाके को पूरा कैप्चर किया गया है। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये वो घर थे जहाँ पर अंदर घुसे ये हमास के मिलिटेंट्स, और उन्होंने क्या बर्बरता की, ये हम देखने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए, उस समय ये ज़्यादातर लोग अपने घरों में थे। हालांकि कहा जाता है कि इन घरों को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। सारे घर आपको खाली मिलेंगे, कोई शख्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अब अगर आप देखें कि चारों तरफ ये पूरे गांव में, ये आखिरी गांव है, आपको एक शख्स भी यहाँ मौके पर नहीं मिलेगा। सारे गांव खाली कर दिए गए हैं, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जस की तस चीज़ें ऐसी ही पड़ी हैं घर के अंदर, उनकी चीज़ों के अंदर। और देखिए, अभी इसको टेक ओवर कर लिया है फोर्सेस ने। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसी चीज़ें जहाँ हैं वहीं के वहीं वैसी ही पड़ी हैं। लोग सौयों की संख्या में लोग मारे गए, बच्चों को मारा गया। IDF ने यह भी क्लेम किया कि देखिए, हमने यहाँ के जो बच्चे थे, यहाँ जो बच्चे थे उनका नरसंहार किया, उनके गले कटे हुए थे। ये IDF की तरफ से लगातार क्लेम किया गया। और ये भी बताया गया कि उनके पास इसके एविडेंसेस भी हैं। और देखिए, हम आज आपको उसी जगह पर लेकर आए हैं। मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको लगातार इन खाली घरों के अंदर उस मातम को, या फिर आप कह सकते हैं कि वो कहानियों को बता रहे हैं, खाली घर जो यहाँ पर उस समय हुई होंगी। क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे लोग आश्चर्य से एकदम से लोगों पर अटैक किए गए होंगे, ये आप देखिए। अगर आप देखें तो मैं कोशिश करूँगा आपको ऐसे ही घरों के अंदर, ये देखिए, ये वो गले काटने वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप देखें ये चाकू हैं, और ये बड़ी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि फोकस करें और दिखाएं कि देखिए, ये वो वेपन्स हैं जिनसे गले काटे गए, जिनसे मारा गया लोगों को। और ऐसे ही घरों के अंदर मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ जहाँ पर आपको खून के सने हुई चीज़ें आपको लोगों, देखिए आप, जो बीच में उनके आपस में झड़प हुई होगी, जो चीज़ें हुई होंगी, सारे घर ऐसे ही खाली पड़े हैं, कोई नहीं है इन घरों के अंदर। ये घोस्ट टाउन जैसा लगता है, यानी भूतिया, या कोई आपको नहीं मिलेगा। देखिए, कई लोगों ने अपने घरों के अंदर किस तरीके से अपने आप को बंद कर लिया गया होगा, कैसी हालत होगी उस समय यहाँ पर, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, अभी महत्वपूर्ण ये है कि आप इन सारी चीज़ों को देखिए और समझिए कि यहाँ के उस समय के हालात कैसे होंगे। चलिए, मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको एक और जगह लेकर चलते हैं। ये सारे घरों के अंदर कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, बताने की कि आखिरकार यहाँ पर कैसे हैं। देखिए, ये अगर आप देखें, ये भी एक ऐसा ही घर है जिसके शीशे टूटे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ घुसपैठ करने की, यहाँ घुसने की कोशिश की गई होगी। सारे घरों के अंदर हालात ऐसे ही हैं। और हमास ने जगह जगह ऊपर अपनी चीज़ें भी लिख दी हैं अटैक करने के बाद।
और देखिए ये है उन घरों की हालत जो इस समय क्या बर्बरतापूर्वक अटैक किया गया था हमास द्वारा इन घरों पर, इजराइल के सिविलियंस लोगों के ऊपर। और देखिए ऐसे ही घर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, सारे घर इसी तरीके से खाली पड़े हैं, जस के तस, कोई शख्स यहाँ पर नहीं है, सारे घर ऐसे ही पड़े हैं, उनकी साजो सामान, उनकी चीज़ें सब ऐसे ही हैं। निशान थोड़ा कैमरा इधर रखिए और आप ये दिखाइए लगातार कि कैसे हैं इस समय हालात। ये देखिए किस तरीके से चीज़ें पड़ी हैं लोगों के, अपने साजो सामान के साथ साथ वेपन्स भी हमने आपको दिखाया कि कैसे वो जो जिन चीज़ों से उनको मारा गया वो भी वेपन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। और देखिए जूतों के निशान, एक एक घर को, हालांकि इसके बाद आईडीएफ ने सर्च किया, निकाला, लेकिन अभी क्या हालात हैं ये आप देखिए। मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपने कैमरा पर्सन निशांत के साथ। They picked my husband. He was tortured there for 2 years. He was enforced disappeared. We had no idea where he is. Within 15 minutes, we got the information that the whole area is surrounded by Pakistan Army. I came out from that in disguise, and after 5 to 6 hours, I was in Kandahar. I don't have any message for Pakistan. There is no politician in Pakistan. They are puppets of Pakistan Army. Streaming now. This and more streaming on world's first news OTT, News9 Plus. Download now. मैं तो चलिया विदेश। No, it's not a story of diversity in India. It's about a burning desire to leave the country, whatever it takes. जो मिट्टी वाला जो टंकी है ना जे इंग्लैंड में है सभी, और कनाडा में भी है जी सभी फैमिली। साथ वाली बाइट में है वो इंग्लैंड में है अभी। वो जो बाज बैठा हो ना जहाँ ईगल, वो लड़का डिपोर्ट होकर आया ऐसे अब 20 साल बाद। They polish their English and sometimes adapt a British or American twang. जासू, bonjour, bonjour, hola. My name is Surina. I want to go to apply for Australia. To earn enough for a luxurious life. But this dream comes at a price. Often dreamers end up paying for it with their lives. Whenever anything happens, right, there will be very dark underbelly of it. You're aware of these donkey routes and donkers where people are getting money, selling their lands, putting things in mortgage in India and giving it to people who are acting as middlemen and consultants to ship them to various countries. The number has increased a lot. If I see a data from the government sources, 3,000 plus was in 2016 only for USA.
it jumped to 16,000, 4 times more than that in the last year, into 2020, you can say. Punjab and Haryana are the topmost two states, and both of them are very rich and fertile in agricultural production. Broadly, Punjab is divided into 3 regions: the Malwa, the Doaba and the Majha. Traditionally, Malwa has larger land holdings and businesses have prospered. The residents of Majha have smaller holdings and a more radical mindset. Doaba is the region that's inhabited by wealthy traders and has been the hub for a thriving illegal immigration business, started almost 50 years ago. I am currently standing at the bus stand area of Jalandhar, also known as the NRI hub. This has more than 946 immigration companies, aisle center and air ticketing offices. Now speaking to people from the ground as well as law enforcement officials in Jalandhar, we have come across few interesting developments in the recent years, especially after the pandemic. First, there has been at least 40% increase in the last 1 year when it comes to illegal immigration across Punjab. Second, a 25% increase in the dropout rate. Children have been dropping out, especially in the higher education category, as it has seeped inside their minds that this land of 5 rivers has nothing to offer when it comes to job prospects or any other alternative career they want to pursue. पॉलिटिशियन इतनी गंदी है और नशा इतना बढ़ चुका है, उसकी वजह से सभी बाहर जा रहे हैं और किसी को जॉब नहीं मिल रही। पढ़ भी ले रहे हैं अच्छे लोग, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर है ना, होशियारपुर पढ़े लोगों की पूरे पंजाब में माना जाता है। जहाँ से मैंने मेरे मासी का लड़का था, उसका दोस्त था एक, जॉर्जिया में रह रहा था, तो उसने बोला भाई अगर तुम जहाँ पे आएगा तो जहाँ से तुम आगे शायद मूव हो जाएगा, आगे को जा सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे। मैंने उस टाइम मुझे भी नहीं मालूम था। चलो उसके बाद 4.5 लाख रुपया ला के मैंने स्टडी के लिए वहाँ पे गया और 6 महीने की स्टडी की वहाँ पे। तो उसके बाद चलो मैं अभी स्टडी भी ख़त्म हो चुकी, तो फिर भी जॉब उधर ट्राई करने लगा, तो जॉब भी नहीं मिली। तो एजेंट को 3000 दिया और उसके बाद मैंने बस के नीचे इलीगल रास्ते से इस्तांबुल गया। और जो बस का रास्ता था वो इतना डिफ़िकल्ट था जाने के लिए, क्योंकि बस के नीचे था, सीटों के नीचे था और वो बहुत डेंजरस था। बाद हम फिर इस्तांबुल गए। इस्तांबुल हमने कम से कम 25 डेज़ वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट आगे कर दिया, एक इलीगल रास्ते से ही जा रहे थे हम। छोटी वैन के अंदर 40 बंदे थे जैसे ऐसे कम। तो उन्होंने हमारे ग्रीस को बॉर्डर के पास ले गए और वहाँ पे जो स्पीड बोर्ड की वजह से वहाँ से उन्होंने पार लगा दिया। और वहाँ भी डिफ़िकल्ट था, दलदली रास्ता था, ख़तरा था, भूखे थे और बहुत तकलीफ़, जंगल से जा रहे थे ना, बहुत मुश्किल था। तुर्की और ग्रीस का बॉर्डर क्रॉस करके हम ग्रीस में एंटर हुए। तो उसके बाद हमें पुलिस वहाँ पे किसी ने लड़के ने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया, वहाँ के लोकल आदमी ने। तो हमें पुलिस पकड़ के ले गई और सेंटर में ले गई, जहाँ पे उनको लेके इलीगल पर्सन को लेके जाते हैं। वहाँ पे ले जाकर उन्होंने हमारे फिंगर लिए और हमें छोड़ दिया और भूखे छोड़ दिया। हम बहुत बुरा हाल था हमारा। उसके बाद हम अलेक्जेंड्रोपोली गए, वहाँ पे ट्रेन लेने के लिए, वहाँ पे एथेंस में जाना था। एजेंट से बात की, वो बोलता हमें इटली भेज देंगे आपको। मेरा मेन मोटिवेट तो यही था भाई चलो झुके जाना है, वहाँ पे अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं। मेन पॉइंट तो ये था, इंग्लिश बोलते हैं वो। 3200 और 500 देकर वहाँ स्पीड बोर्ड से वहाँ पे गए और इतना ख़तरा था कि इटली में जब हम एंटर, वहाँ थोड़ी दूर से हो गए, जैसे 50 किलोमीटर की, और लहरें इतनी थी कि हम डूबने से बच गए। भगवान की कृपा से, जो भी रब ने कृपा हुई है ना। मेन टारगेट तो हमें झुके जाना था। तो ट्रेन पकड़ी वहाँ से और पेरिस गए, पेरिस से डंक्रिक गए। बहुत ट्राई की, हम एक दफ़ा पास भी हो गए थे कैले में, फ्रांस में, और एक दफ़ा तो हम पास हो गए और डुबर में पहुँच गए इंग्लैंड में। तो उधर डुबर में
उन्होंने वापस वो सी पोर्ट में ही पकड़ा था, तो उन्होंने वापस हमें इधर फ्रांस में कैले में भेज दिया। तो मैंने सोचा चलो मन बनाया, मैं जाना तो था, इतना टाइम ख़राब हो रहा है, अभी पैसे भी चाहिए थे। तो उसके बाद मैंने चलो हाँ कर दी और स्विट्ज़रलैंड के लिए चला गया। Despite the hardships he has faced on these illegal migration attempts and being scammed by immigration agents, Yuvraj still has a burning aspiration to settle in the UK. Unfortunately, his latest attempt to move to Birmingham has failed again. हम लोगों ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि हमें बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम करेंगे। बट बाद में क्या हुआ, हम जैसे जैसे उन्होंने पैसे मांगे हम लोगों ने पैसे दिए, सब कुछ दिया, ऐसे ही टालते रहे हमें। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हमने कॉल करी, तो जो नंबर हम कॉल कर रहे थे किसी एजेंट ने उठाया, लड़की थी वो, उसने बात करी, हम लोगों ने बात करी, तो उसने क्या किया, हमारा फ़ोन कट कर दिया और हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो वहाँ पे गए तो हम लोगों ने उनसे बात करी कि नहीं हमें अपना केस जो है वापस लेना है। फिर 2-3 महीने ऐसे ही हमें मतलब लटकाते रहे। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड गए तो उनको 3 लाख में से सिर्फ 1,25,000 जो वो उन्होंने अमाउंट दिया। Do you still want to go? I want to go again in UK because the last time I failed, so I just want to go again. The World Development Report 2023 says low-skilled workers from India who migrate to the US witness a jump in income of around 500%, followed by the UAE at 300%. It's just a craze. I think most what we've seen is that northern Gujarat is more, and I would also say pockets of Kutch are where people go to foreign countries illegally. Like there, of course, from all over Gujarat, people are going to all these places, but it's more in a legal, streamlined way. The illegal part, I think, is more from northern Gujarat, like Banaskantha, Sabarkantha, Aravalli, all those places. At the mercy of unscrupulous agents, their journeys are often riddled with deceit and death. इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कि सभी लोग कर रहे हैं। Coaching is now starting from grade 3, 4, 5, 6. कोटा जाने वाली बीच राह में आधे टेस्ट देके हैं सिलेक्शन की चाह में। ऑल इंडिया का बच्चा कोटा जाता है। This rat race is for rats, not for humans. So why should we even be a part of it? The Rat Race. This and more streaming on world's first news OTT, News9 Plus. Download now. China won't let us rest easy on our borders, but they will keep flooding our markets. What does Xi Jinping really want? I think he wants the Indian market, no doubt about it. It's really a matter of showing their dominance. India's great Chinese conundrum. Nobody can contain it. Not the United States, not China, not anybody else. Frenemies. This and more streaming on the world's first news OTT, News9 Plus. Download now. BrahMos. Stealthy, lethal, precise. It flies at 3 times the speed of sound and cuts through a warship like a hot knife through butter. China's navy has threatened its neighbors, and they are turning to the BrahMos for protection. The warship killer.
This and more streaming on world's first news OTT, News9 Plus. Download now. Hello and a very warm welcome, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in to News9 Live. I'm Kabir Naqvi and you're watching this special broadcast even as in war zone Israel, what we're picking up and learning and trying to understand, decode and unpack is how Iran is now going to step in because it has, well, threatened and warned Israel of dire consequences if the constant bombardment of the Gaza Strip continues. Meanwhile, we'll also bring you the humanitarian crisis that is deepening in Gaza. We'll bring you the chaos at the Rafah border, which at this point in time seems like the only place for all those who want to get out of the Gaza Strip. That's the only point of exit. And all of this, even as international diplomacy, the top diplomats, they're laboring so that the regional escalation does not really happen. But first and foremost, ladies and gentlemen, here is the latest that we're bringing for you right now. On the 10th day of the Israel-Hamas war, what we're picking up at this point is that 1,400 Israelis have been killed in this unprecedented Hamas attack. Over 3,500 Israelis are injured at this point in time. Many say that number is going to go up. Benjamin Netanyahu has convened an emergency cabinet, vows to demolish Hamas. And demolish over there looking like an understatement because he's been using the word annihilate. Yeah. And the United States has deployed its second aircraft carrier to the Eastern Mediterranean. That second aircraft carrier essentially means there are going to be another slew of aircraft. There is going to be another set of frigates. All of this even as Iran has threatened to open a second front against Israel. And Iran says if you don't stop the bombing, we will have to interfere. The United States Embassy is going to evacuate all the Americans in Israel by sea. Many were suggesting it's going to be the Haifa port. That is going to take place today. But other developments as well, as the United States President says that Israel occupation of Gaza would be a big mistake. This is coming in from a partner of Israel. And now it says that Joe Biden is on record for saying Israel occupation could be a big mistake. 24 hours more fuel at Gaza hospital, says UN, United Nations, ladies and gentlemen. More than 2,600 people killed as Israeli strikes continue in Gaza. That's the Gaza death toll. And the Rafah crossing is going to open today at 9 a.m. local time is what we're picking up, ladies and gentlemen. Rafah crossing. The latest reported casualty figures since Hamas's attack on southern Israel on the 7th of October last Saturday. And the figures are as follows. At least 1,300 Israelis have been killed and at least 3,500 have been wounded. It remains unclear how many hostages Hamas are holding in Gaza at this point in time, but authorities have estimated that number to be between 100 and 150. In subsequent Israeli strikes on the Gaza Strip and the entire enclave, at least 2,329 Palestinians to be precise have been killed, with nearly 10,000 Palestinians currently injured and wounded, a lot of them children and women. In addition, at least 53 people have been killed in West Bank area, with more than 1,100 that have been wounded in terms of the tensions that are flaring up in the West Bank and the East Jerusalem area as well. Now, tens of thousands of people in Gaza are believed to have fled their homes and have moved south following Israel's evacuation warning, which that particular deadline has ceased now. It expired yesterday. Even so, today we got visuals of people still moving towards the southern part of the Strip. Now, according to the estimates by the United Nations Humanitarian Office, the OCHA,
prior to the evacuation order, it said more than 4 lakh Palestinians were already internally displaced. So this is what we're bringing to you on day 9 of the Israel-Hamas war. The death toll currently stands at 3,500, more than 10,000 people wounded on both sides of the divide, ladies and gentlemen. Also, Gazans have fled their homes with their mattresses, with their belongings, some moving around with their pet animals as well, as Israel prepares for its next stage. Meanwhile, Iran has stepped in and warned of consequences if the bombing continues. More on that coming right up, ladies and gentlemen. And Anthony Blinken, United States Secretary of State, has met President of the United Arab Emirates in Abu Dhabi. What we're picking up is also that he's back in Saudi Arabia for his 7-country, 3-day Middle Eastern tour. United States has moved its second aircraft carrier to the Eastern Mediterranean. You've got the USS Honda, the USS Gerald R. Ford, you've got the USS Roosevelt, the USS Normandy, you name it, acting as a deterrent. What for? Because there is a two-pronged attack as well. It could be a two-front war that Israel might face. Now, Joe Biden has called Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, and Palestinian President Abbas as well. So talks are certainly on. Regional escalation. Will we look at things getting really heated up? Even as Israel issues warning to residents to go towards the southern part of the Strip so that the next stage of its offensive on the northern part of the Gaza Strip can continue. United States, United Kingdom have all advised their citizens in Gaza to move closer to the Rafah crossing. Else in Israel, they're going to be picked up and evacuated soon. All those plans, and we'll talk about that as well. Meanwhile, the Israeli Defense Forces is ready for the next stage of operations. Tanks have been mobilized. Soldiers have been amassed near the Gaza border. IDF has deployed tanks along the border with Lebanon as well. All of that is happening. But now, ladies and gentlemen, Iran has threatened of consequences and has said that it will step in if the bombardment of the Gaza Strip continues. How and why? Let's try and understand that. Now, Tehran warned of far-reaching consequences. Far-reaching consequences, why? Well, if the IDF's bombing of the Gaza Strip is not stopped, diplomats are working around the clock to prevent the Israel-Hamas war from escalating into a regional conflict that could include Hezbollah and Iran. What you're looking at are visuals of how the leader of Hamas is meeting with the foreign minister of Iran. Now, Iran has issued public warnings and has sent a private message to Israel through the United Nations. This is what we're picking up from the Jerusalem Post that has been corroborated on various other websites that are running in the Middle East as well. This private message has been sent to Israel from Iran via the United Nations that Iran could intervene if Israel continued its military campaign to root Hamas out of Gaza, according to a report that was first published by the Wallah News site and later was confirmed by the renowned Jerusalem Post as well. These are visuals of that particular meeting, Hamas and the Iran foreign minister as well. But even as we're trying to understand how much damage can Iran actually make, we must understand what the Iran-backed proxies look like. Now, in general, it seems like there are 3 Iran-backed proxies against Israel. In South Lebanon, take a look at that. The Iran-backed Hezbollah exists. We already know about the attacks that are continuously happening on the northern front as well. Only today, the Israeli forces have struck another post in South Lebanon. On the Gaza Strip, what we already know is that Iran is backed by Hamas. We already saw those visuals of how the Hamas top leader was with the Iran foreign minister. It's a tie, it's a coalition, but the Hamas, which many around the world deem as a terrorist organization. And then finally, in Syria, the entire regime, it seems, is Iran-backed. What's more is that Israel right now has also alleged and accused Iran of sending arms and ammunition into Israel via Syria. This is the latest that we're picking up. The message was conveyed via the United Nations channel, ladies and gentlemen. Diplomats are continuously laboring to prevent regional tensions from escalating, but the Iran-backed proxies on your screens over there. In South Lebanon, we've got the Hezbollah, you've got the Hamas in the Gaza Strip, and of course the Syrian regime backed by Iran. Meetings are going on, ladies and gentlemen. How can Iran
come in and play the spoil sport here is what many people are talking about. We'll also quickly show you, going on forward in the bulletin, about the United States and how they've stationed their frigates, their nuclear-powered air carriers, the F-16s, the F-35s, the A-10s. They're all stationed in the eastern Mediterranean, acting as a deterrent. Has Tehran really entered the fray? Pro-Palestinian protests, pro-Palestinian rallies have been held in Tehran for the longest time, ladies and gentlemen. Thousands gathered in Tehran earlier in the week as well. Well, now what's more, the leader of the Palestinian Islamist Hamas group said in a video released on Saturday that Palestinians will not leave Gaza or the West Bank to migrate to Egypt. Ismail Haniyeh, who also met with the Iranian foreign minister, made the statement from an unknown location via televised address. There will be no migrating from Gaza, no migrating from the West Bank, no migrating from Gaza to Egypt. And here, I would also like to salute the stance of our siblings in Egypt and who maintains that Egypt is indeed a country and is our sibling and a refuge and is welcoming to the Palestinian people, but not on the grounds of migration or displacement. And neither of us can ever accept that. And I say to my siblings in Egypt, our decision is to stay in our country, so your decision is our decision. And standing in the face of the Zionist plan that is supported by the American administration, we will make it fail, God willing. I highly appreciate, in the name of Palestinian people, these rallies and these flooding of masses, and I call it for it to continue. When the Hamas fighters burst out of the Gaza Strip just a week ago and launched a deadly assault on Israeli civilians and soldiers, triggering heavy bombardment of Gaza. Israel has already told the population of north of the Gaza Strip, estimated to be more than 1 million people, to leave as it threatens to launch a ground offensive into the enclave. The United Nations has come out and said, well, even as you're looking at all these visuals of the thousands of cars that are moving towards the southern part of the Strip, it's actually impossible to relocate 1 million plus people within a span of 24 hours, even as those 2 safe roads that were open were attacked by Israeli strikes as well. And just like other Arab states, Egypt has said that Palestinians should stay on their land as the war escalates, and that it is working to secure delivery of aid into the Gaza Strip. Ismail Haniyeh, the Hamas leader, we just heard him speak as well, asking and urging all the Palestinians to not move, to not migrate into Egypt, either from the Gaza Strip or from the West Bank. He met with Iran's foreign minister yesterday in Qatar, where they discussed the Palestinian terrorist group's deadly attack in Israel and agreed to continue cooperation to achieve the group's goals. Now, this has also been confirmed by the Hamas in a statement. Now, during their meeting in the Qatar's capital Doha, Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian praised the rampage as a historic victory that has dealt a setback to Israel's occupation of the Palestinian territory. Meanwhile, that's not all. A senior Israeli official has accused Iran of trying to open a second war front by deploying weapons in or through Syria. This as Israel steps up a counteroffensive in Gaza to the south. Responding to a post of the X social media platform that posited such a scenario, Joshua Zarka, the head of strategic affairs for Israel's foreign ministry, said that the Iranians are supplying weapons. The original post also said the Israelis are determined to prevent such developments. To that, Zarka responded that we are going to curb all these developments. Now, Syria accused Israel of carrying out strikes against Damascus and Aleppo airports just last week as well.
So even as this potential two-front war looms large, Israeli tanks have been stationed along the border with Lebanon this very morning as troops are preparing for a possible ground assault on the Hamas-controlled Gaza Strip in the country's hit back for an unprecedented assault on its territory. And Iran, let me reiterate, has warned of far-reaching consequences if Israel's bombardment of the Gaza Strip does not stop. The tanks and the soldiers have been amassed near the border along with Lebanon. This, even as the Israeli officials have accused Iran of pegging a two-front war, either by giving arms to Syria or supplying arms against Israel via Syria. Now, Israel has vowed to annihilate the terrorist group Hamas, this in retaliation for the rampage by its fighters in Israeli towns just 8 days ago, in which its terrorists shot men, women and children and seized hostages in the worst attack on civilians in the country's history. Some 1,300 people were killed in that particular unexpected onslaught on the 7th of October, which completely shook the country, with horrifying mobile phone footage and reports from medical and emergency services of atrocities in the overrun towns and kibbutzes. Israel responded by subjecting Gaza to the most intense bombardment it has ever seen, putting the small enclave, which is home to 2.3 Palestinians, many call it an open-air prison, under a total siege and destroying much of its infrastructure. Israel's military has also released videos of tanks and soldiers massing south of the country near the Gaza border on the 14th of October, saying that it was ready for the next stage to fight against Hamas in the anticipated ground assault on Gaza. Take a look. The Israeli Defense Forces, the IDF, said on its website that battalions and soldiers were deployed across the country and that they were, quote-unquote, increasing operational readiness for the next stages of the war, with an emphasis on significant ground operations. Well, so Iran has stepped in. Humanitarian crisis continues to deepen. Evacuation is a big question mark. Meanwhile, Israeli forces and soldiers have deployed tanks and soldiers across the borders, even the border along with Lebanon and, of course, the Gaza border. My colleague Manish Jha, who is in Israel, is getting us the latest from war-torn nation. He's also spoken to some Israeli soldiers. One of them goes on to say that he's going to visit India very soon. इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देखिए कि मार्क 4 टैंक में जो टैंक के सेल को टैंकिस्ट प्लेस कर रहे हैं उसको आप देखिए कि कितना बड़ा सेल है। तो आप सोचिए कि एक तरफ से जहां हमास के रॉकेट के हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मार्क 4 टैंक के सेल से उसका जवाब दिया जाएगा और बीच बीच में जो धमाके की आवाज़ यहाँ पर बॉर्डर पर सुनाई देती है, फ्रंट लाइन पर सुनाई देती है, वहीं ठीक दूसरी तरफ देखिए अमित, दूसरी तरफ आप दिखाइए, बहुत सारे जो टैंक मैन हैं वो एक एक सेल को लेकर जा रहे हैं और उसको अपने अपने टैंकों में। तो देखिए कभी भी शुरू हो सकता है ये ऑपरेशन। कुछ घंटे के बाद हमास पर को नेस्तनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन जो होगा, उसके लिए देखिए अभी किस तरीके से इस टैंक में जो टैंकिस्ट हैं वो सेल को प्लेस कर रहे
रहे हैं ताकि एक साथ अटैक किया जा सकता है। आज की रात भारी पड़ सकती है हमास पर, आज की रात गाजा पट्टी पर भारी होगी। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सोल्जर अपने हिसाब से तैयारी करके उन्होंने रख लिया है। बस एक सिग्नल का इंतज़ार है, जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा और ये कूच कर पड़ेंगे गाजा पट्टी में दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद जैसा कि IDF का कहना है कि फिर 100 साल तक कोई भी इजराइल की सरजमी पर आक्रमण करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यहाँ पर हम आपको उन सोल्जर्स को भी दिखाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड ऑपरेशन करने से पहले वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं, बात करते हैं इसमें। हाय, दिस इज मनीष झा, आई एम फ्रॉम इंडिया। Hi, Gabriel. So Gabriel, you are here and any moment you can go for war. So before coming here, what you were doing? Before coming here, I was working in an accountant's office, and I was doing some accounting. So basically, you are an accountant, and then when your country called you, then you are here. Yes, that's very correct. Hi sir, what's your good name? Micha. Micha. And before coming here, what you were doing? I'm a school teacher. I teach. School teacher? Yes, I teach civic studies and mathematics to the 10th grade. And now you are having weapon. I'm having a weapon because that's what my country needs. I hear the call and I have to come here. Not something that I really want to do, but something that I have to do. You know, I was in Russia last year. I saw lots of Russian citizens were leaving the country. But when I was coming to Israel, I saw lots of Israeli persons were coming back to Israel. So, do you think that this is the specialty of all Israelis? Whenever your country needs you, you are here. Yes, as we see by the statistics, reserve soldiers are being 150% of reserve soldiers arrived. For myself, I didn't even receive a formal invitation to come here. When I saw the situation on Saturday, I took my uniform, took my bag, packed it, and although we don't have public transportation on Saturday, I asked my father to take me right down here. Oh my God! So normally, how much time you get when you call for the duty? It really depends. It varies. We were called up straight away. I was called up straight away. But it depends on people, and it depends on the situation. So both of you have a first experience to come at the ground zero, like Operation Zone. Again, I'm sorry. My question is that both of you have a first experience to do duty at Operation Zone. Well, I didn't take any part on any formal operation. We served in the regular forces. You know, all the only the batash. Daily operational Daily duty. operational defense missions. Yeah, that's what we did. My question is, before coming to war zone, what was your job? Like what you were doing? My job is to prepare now for the next step. I don't know what we're going to do. I can't talk about it. Yeah. But we are prepared, like you see, and that's all. Israel going to win this war. Okay. All the terror going to. Okay, and you were saying me that you have some connection with India. So please tell us, what is your connection with India? What? I didn't. The India link. What is your connection with India? My father, born in India. I don't remember which city, but he's born in India, and you know, I have a big connection to India. Oh, great. So have you visited India? Not because I'm here, but after I'm afterward you will visit India. Yeah, I will visit, and maybe we sit on a cup of coffee one day. Great. Good. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. I'm just asking, so when you got information that you have to come here, so what was your reaction, your family's reaction? So we don't have to come here because we are instructors, we are not combat soldiers. But when everything started, of course we wanted to come and help. And our families are worried, I think everyone is worried. But we know we have to do this, we have to help. So we are here. Well, now coming back to international diplomacy, Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian and his Syrian counterpart Faisal Mikdad
on Friday expressed solidarity with the Palestinian people in protecting their legitimate rights and called for an immediate halt of Israeli military operations in Gaza. Abdollahian visited Damascus, the capital of Syria, for talks with his Syrian counterpart Faisal Migdad, this regarding the escalating conflict. Now, during the meeting, both the leaders expressed their unwavering support for the legitimate struggle of the Palestinian people against the Israeli military operations and their strong opposition to the Israeli airstrikes targeting civilians and civilian settlements in the Gaza Strip. At a joint press conference held after the meeting, Migdad emphasized that the gravity of the situation primarily stems from Israel's disregard for the rights of the Palestinian people and its persistent aggression and oppression. Echoing Migdad's remarks, Abdollahian stressed the urgent need for Israel to immediately halt its military operations in and across the Gaza Strip. And if that's not all, another bloc is meeting up. United States Secretary of State Antony Blinken, he met with UAE President Mohammed bin Zayed in Abu Dhabi yesterday during a regional visit aimed at preventing the Israel-Hamas conflict from widening. Now, the stop in Abu Dhabi was part of Blinken's 7-country Middle East tour. The US official has also sought China's cooperation in preventing the conflict from widening into a bigger war during a phone call with his Chinese counterpart Wang Yi. Washington is determined to ensure Iran and Iran-backed groups such as Lebanon's Hezbollah do not enter the conflict. We've also got visuals of how he's met with various other leaders in the United Arab Emirates and in Saudi Arabia as well. What we're picking up latest is that he is back in Saudi Arabia after a brief and short visit to Abu Dhabi. Now, Israel has vowed to annihilate the Hamas terrorist group that controls Gaza. This all in retaliation for the rampage by the fighters who stormed through the Israeli towns just a week ago, gunning down civilians and making off with scores of hostages. Some 1,300 people were killed in the worst attack on civilians in Israel's history, ladies and gentlemen. But Blinken has returned to Saudi Arabia after a brief visit to the UAE. What we're getting are visuals of the Secretary of State of the United States of America, coming back to Saudi Arabia. Now, it's important how Saudi Arabia and Israel and their peace, it's important for India's economic corridor as well. It's important for Europe and the United States that that corridor also becomes a reality, ladies and gentlemen. What he says that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and I, that's Antony Blinken, met today in Riyadh and discussed the Hamas terrorist attacks on Israel. So after meeting with the president, he then later met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman as well. And even as Israel prepares for a possible ground invasion in northern Gaza, it could happen tonight, could happen in a couple of days, could happen in a couple of hours. Tensions are escalating and high. Its most consequential ally, the United States, is moving to support the war effort against Hamas. This aid involves the provision of military aid such as interceptors for the Iron Dome system, smaller diameter bombs and JDAM kits that can convert dumb bombs into smart bombs that can be guided onto targets. Now, the US has already moved the USS Gerald R. Ford and its carrier strike group into the region while reinforcing its standing fleet of warplanes in West Asia, namely the A-10s, F-15s, the F-16s, the F-35s. And to add to this, a second carrier strike group is reportedly on the way to the eastern Mediterranean. Now, the USS Dwight D. Eisenhower and its accompanying fleet, alongside existing US assets in the region, USS Normandy, USS Honda, USS Gerald R. Ford, also nuclear powered, by the way, will reinforce the warning given out by Joe Biden that other nations, especially Iran and Lebanon, should not try and take advantage of the conflict between Israel and Hamas. The expanded military presence in the United States
of the United States, beg your pardon, has raised concerns that the conflict between Hamas and Israel will become a wider regional conflict involving the likes of Iran and Lebanon, two countries that support Hamas. An Israeli cargo plane also landed back in Israel, delivering initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. The equipment was procured and brought to Israel by the Israel's Ministry of Defense's DOPP. Meanwhile, looking at the humanitarian crisis, even as it widens, there is no supply of food. There is shortage of electricity, there is absolutely no energy, and in those kind of situations, everybody is making a run for the Rafah border. The Rafah border, the crossing with Egypt. It's on the southern tip, it's on the southern part of the Gaza Strip. And Israel prepares for a potential invasion of Gaza, the Rafah crossing between Gaza and Egypt, standing as the sole feasible means for evacuating people from the conflict zone, ladies and gentlemen. Nonetheless, it remains uncertain whether this crossing will be functional and accessible to refugees. The Rafah border is currently closed. It leads from the Gaza Strip to the Sinai Peninsula in Egypt, and Egypt strictly controls access to its territory. They simply don't want a humanitarian crisis right at their doorstep, which is why they have placed trucks on the other side with enough relief aid for all the Gazans in need. They don't want a flood of refugees. It's not surprising, so to speak, because it's always been Egypt's position. They help with aid, however, don't want to deal with millions of people. Experts say people will not be allowed to enter Egypt in large numbers for sure. Besides, Egypt also has a security situation in Sinai. Lots of anti-government groups. In the past, Egypt had accused of the Hamas of helping and sheltering such groups. The Rafah border also extends downward, making it difficult for Hamas to build its tunnel structure under the border. Now do remember, Israel dropped bombs near the crossing so that it's more reason for the pass to be difficult to access. Now that the United States has its citizens in Gaza, not just possible hostages, dual American Palestinian citizens, the Americans will not just let them die. So it's negotiating a safe passage with Egypt. On the other hand, stand those various and long lines of trucks with the relief aid. But this probably will not allow other millions of people stuck on the strip to leave. Apart from the United States, the United Kingdom has also asked their citizens to get closer to the Rafah border so that they can escape when Egypt allows people to cross over. They can stay closer to the Rafah border in the south while Israel bombs and shoots the northern part of the Gaza Strip. And take a look at this, the truck full of relief aid standing on the other side. New aid flights have arrived in Egypt's Sinai Peninsula only yesterday, where relief materials are being held until safe passage for the delivery into nearby Gaza Strip can be secured. Egypt says its side of the Rafah crossing that connects Sinai with the Gaza Strip remains open, though traffic has been halted for several days because of Israeli bombardments on the Palestinian side of the border. An Egyptian security source stated that Egyptian security forces have been reinforcing security on their side of the border, including by moving concrete barriers, but reports that they were sealing off the crossing were incorrect. The crossing is the main exit for the Gaza Strip's 2.3 million residents that is not controlled by Israel. Israel and Egypt have upheld a blockade on the enclave, tightly controlling movement of goods and people since Palestinian Islamist group Hamas took control there in 2007. 2 aid flights, including one from Turkey, arrived at Al Arish, about 45 kilometers from the Gaza border, bringing the total number of planes that have arrived this week carrying humanitarian relief for the Gaza Strip to at least 5 planes. Latest in terms of the airstrikes held at the hands of the Israeli Defense Forces. Over the course of the day, the IDF continued to strike Hamas military targets in the Gaza Strip, including in Jabalia,
Zaytun, Al-Furqan and Beit Hanun. The targets that were struck include terror operatives, operational command centers and dozens of mortar shell launchers. During the evening, an IDF fighter jet located a building containing the IDF identified a number of Hamas operatives exiting a terror tunnel in the Gaza Strip. An IDF aircraft was mobilized and it killed the terrorist and struck the terror tunnel, completely blocking it. And degrade their capabilities. Following the shooting towards an IDF military post on the Lebanese border, the Israel Defense Force is continuing its strike in the area. Israel has also declared a zone within 4 kilometers of the Lebanese border off limits to public access. You're taking a look at the IDF striking a particular target in Lebanon. And Lebanon's Hezbollah has claimed responsibility and injured other 3. Explosions and black smoke were seen on Gaza. As smoke billows and thick plumes of smoke rose above the Gaza skyline. Gunfire was also heard near the northeastern border of the Gaza Strip. Now, Israeli troops prepared throughout the day today for a ground assault on the Hamas-controlled Gaza Strip as the country hit back for the unprecedented assault on its territory. Israel has vowed to annihilate the terrorist group Hamas. Meanwhile, even as that constant bombardment continues, residents of Khan Yunis searched through the rubble of a building destroyed by an Israeli airstrike on Saturday as hope diminishes to find the survivors. It was an extremely strong explosion. We were surprised as we were asleep, my children, wife and I. When we woke up, we saw that my home and my brother's house were damaged, while the neighbours' houses had collapsed. We rushed to where the strike hit and were surprised to see that a 3-story building had collapsed and there were martyrs under the rubble. We called the medics and bulldozers to remove the rubble. Martyrs are stuck under the rubble, and until now, neither us, nor the medics, nor the civil defence are able to take them out. And even as we're bringing you these new drone footages that have been taken in a Gaza neighborhood that show excavators working to remove rubble from a collapsed building site in a residential area. Again, the operative part here being that it was a residential area. These are visuals from today, ladies and gentlemen. People are standing, watching over the work next to the nearby greenhouses that were also partially damaged, even as the constant bombardment of the Gaza Strip continues at the hands of the Israeli Defense Forces. And because of that constant bombardment, thousands of Palestinians fled the north of the Gaza Strip ever since yesterday. That deadline has in fact expired, but people are still traveling from the North Gaza to the south, from the path of an expected Israeli ground assault. Now, while Israel pounded the area with more airstrikes and said that it kept 2 roads open to let people escape, those people escaping were again hurt and hit by the strikes. As explosions were seen on the Gaza City skyline Saturday, the Israeli military said its forces were preparing to implement a wide range of operational offensive plans with, quote, an emphasis on significant ground operations. Thousands of Palestinians continue to flee the northern Gaza Strip ahead of an expected Israeli ground assault, while Israel said it kept 2 roads open to let people escape.
Outside Gaza, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was seen in a government press office video visiting troops and telling them to be ready for the next stage without elaborating. Reuters video showed paramedics and rescue teams operating in an area of northern Gaza, which was hit by an airstrike, forcing them to scramble away quickly. Israel has bombarded the Hamas-run Gaza Strip with unprecedented airstrikes after Hamas fighters stormed through Israeli towns a week ago, gunning down civilians and taking scores of hostages. Some 1,300 people were killed in Israel. More than 2,200 people have been killed in Gaza, according to authorities there. But Israel's attacks on Gaza failed to halt Hamas missile strikes deep into Israeli cities. On Saturday, rockets smashed into a greenhouse in Ashkelon and wounded 4 people at a kibbutz. Back in Gaza, crowds of foreigners hoping to escape waited at the Rafah border crossing with Egypt. Egypt said its side is open, but traffic has been halted for days because of Israeli strikes. This young British girl said she is desperate to leave. I'm really in fear, and every time I just have to have the thought of me dying in a bomb in Gaza. It's not a good thing, but it's a really scary thing for me. A senior U.S. State Department official said the United States was working to open the crossing on Saturday to let some people out and had been in touch with Palestinian Americans who want to leave Gaza. Well, we showed you what's really happening in the Gaza Strip, in Israel, what's happening up front on Syria, in Lebanon, how is Egypt reacting. Now let's take a look at how the global community is divided over the Israel-Gaza conflict. Amid the ongoing Israel-Hamas war, pro-Palestinian rallies are being organized in many places around the world. Around 2,000 people gathered in Sydney's Hyde Park on Sunday, many waving Palestinian flags, whilst hundreds of police patrolled the area and nearby streets. Pro-Palestinian supporters also rallied in Tokyo, in Japan, as Israel prepares its ground assault on Gaza. It could happen, like I said, in the next couple of minutes, hours, or days. Genocide is crystal clear. Not a conflict, not a war. Palestine will never die. Free Palestine. Simply because the people, the 700,000 plus people that's left their home. Message to United Nations. Message to United Nations. Time. Keep open our hearts. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Palestine. Free Palestine. Allah. And if anyone even begins, Palestine will be free! But now earlier, thousands of protesters gathered in London, even as you're looking at visuals coming across from Australia. From Australia to London, Jewish communities in the United States, France and elsewhere also held rallies in solidarity with Israel after the Hamas attack from Gaza. So pro-Palestinian rallies and pro-Israel rallies that are happening at the same time. Even as people are protesting, Gazans back home are searching for survivors after the Israeli airstrikes. Some of those startling visuals on your screens, ladies and gentlemen. Several bodies still under the rubble after family homes completely demolished in the Israeli airstrikes.
Meanwhile, on the international diplomacy front, China has reacted to the ongoing Israel-Hamas war, with the country's top diplomat, Wang Yi, expressing concerns about the situation. Now, it's important to understand that in terms of power blocks, Iran, China come together. On the other hand, you've got the United States and Israel on the other hand. Now, Wang Yi expressed concerns about the situation. And it's interesting to note here because Wang Yi stated that Israel's actions have extended beyond the boundaries of self-defense. This statement comes in the wake of Israel's evacuation order for approximately 1.1 million residents in the northern part of Gaza as the Israeli Defense Forces prepare for a ground offensive. During a telephone conversation with Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud on Saturday, Chinese Foreign Minister Wang Yi reiterated China's opposition and condemnation of any actions that cause harm to civilians as they infringe upon the fundamental principles of international law. Wang Yi emphasized that Israel should heed the calls of the international community and the United Nations Secretary General and avoid inflicting collective punishment on the people of Gaza. Amid all this tumultuous turmoil, Indians need to be brought back home as well. And that's exactly what the government of India is doing. Because amid the ongoing Israel-Hamas war, India had launched Operation Ajay to facilitate the return of those who wish to come back home. A fourth flight under Operation Ajay, carrying a batch of 274 Indian nationals, reached Delhi today from Israel. The Indian nationals were received by Union Minister General V.K. Singh at the Delhi airport. You can see each of them being handed a small